नमस्कार, जय जगन्नाथ। राज्यस्तरीय विश्व वन दिवस उपलक्षे आपण मान प्रतिभरा अभिनंदन अर्पण करुछु। जयदेव भवन प्रेक्षालय उपस्थित आपण मान सहित ए कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग रे संयुक्त होइथिबा यूट्यूब एवं फेसबुक रो अगणित दर्शकों को वन दिवस विश्व वन दिवस अवसर में आमर अनेक अनेक अभिनंदन। स्वल्प समय मध्य वरेण्य अतिथि मंच मंडन सहित ए कार्यक्रम आनुष्ठानिक शुभारंभ होगापी जाऊँगी एवं आज आपण मानकर ए भव्य उपस्थिति ए कार्यक्रम को अधिक गरिमामय करुछि। प्रकृति रे जेतेबेले बसंतर राजुति आंब बौलर महकरे जेतेबेले दिग विदिग महकित दूर केउ तरुबररु जेतेबेले तरुआहाडरु भासी आसुछि कोकिलर पंचमतान मंद मृदु मलय पवन रे सिहरित हेउछि तनु एवं मन। ठीक सही समय रे विश्व वन दिवस पालन करुछि समग्र विश्व एवं अरण्य पाई ए दिवसटी समर्पित। यह निश्चित रूपे आम समस्त को उत्साहित करुछि उच्चाटित करुछि एवं आपण मन को आमे कहि रखिबु। राज्य सरकार जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन विभाग स्वतंत्र प्रयास रे उद्यम रे राज्य स्तरीय विश्व वन दिवस पालित हेउछि एवं लक्ष्य रही आम अरण्य संपद जहाँकि आम जीवनर एक अभिन्न रेखा हो रही आसी से संपर्क रे एवं अरण्यर जो विशेष महत्व रही गुरुत्व रही आम जीवन पाई एवं विश्व पाई विश्व जनजीवन पाई समस्त जीव जगत पाई सेथिपाई एभली एक कार्यक्रम माध्यम आम एक सचेतनता सृष्टि करने सहित यार प्रकृत अभिलक्ष्य संपर्क में आपण मान आम सूचित करूँ। आम समस्ते जानू जीवन रक्षाकारी अम्लजान उत्स होउछि अरण्य। निरामय जीवन रे औषधीय वृक्ष आधार भूमि होउछि अरण्य। वन्य प्राणी एवं विहंग मानकर प्राकृतिक बासभूमि होउछि अरण्य एवं भारतीय जनजीवन जीवन रेखा होउछि अरण्य एवं ए अरण्यर स्वतंत्रता को आमे अनुभव भितर नहींछे एवं से अनुभव को सार्वजनीन करने सहित अरण्य संपद किभली भाव आम जीवन एक आधार पलटि ताकू नहीं एभली कार्यक्रम आयोजन एवं आपण मैंने जानी खुशी हेबे मिलित जातिसंघर खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निर्धारित चलित वर्ष विश्व वन दिवस प्रसंग रही जंगल एवं स्थायी उत्पादन और व्यवहार ए संपर्क में आज वरेण्य अतिथि मध्य आलोकपात करने सहित आज जंगल सुरक्षा पाई समर्पित होइथिबा किछि बंधु मान को रेंज ऑफिसर एवं फॉरेस्टर बंधु मान को आज एभली एक कार्यक्रम रे मध्य संबर्धना प्रदान करा जिवो जो मान को आमे संबर्धना प्रदान करी गौरवान्वित हेबु। सर्वोपरि आपण मान को आमे कहि रखिबु भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थार द्विवार्षिक आकलन अनुसार आम राज्य रे 2019 मसीह 2021 मसीहार अवधि मध्य 893 वर्ग किलोमीटर जंगल अंचल अभिवृद्धि घटी एवं जंगल अभिवृद्धि घटिबा एवं जंगल विकसित हेबा केवल यह सबुजिमा को विशेष भाव में प्रख्यापित करूना एक सबुज परिमंडल सृष्टि करूना बरं आम जीवन को सुस्थ एवं निरामय करने पछरे तार एक विशेष अवदान रही एवं यही प्राकृतिक सबुजिमा भरा परिवेश आमर सुस्थता पाई आमर निरामय जीवन पाई जेतिक आवश्यक यह मध्य मानसिक सुस्थता प्रदान करने सहित आम भितर सर्जनशीलतार उन्मेष पाई एक विशेष सुजोग सृष्टि करे। सेथिपाई सबुजिमा सबुज श्यामल श्रीमंडित ए प्रकृतिर शोभा को संदर्शन करी कविर कविता मध्य आपे आपे झरी आसी तार मधुश्राविणी लेखनी एवं तारि भितर सर्जनशीलतार जो प्रकाश होईछि यह आम सारस्वत भंडार को करिछि मध्य पुष्कल एवं तारि भितरे आमे आपण मान को मध्य कहि रखिबु आम नदी समूहर जलस्रोत को चिरस्रोता करबा पई सबुज महानदी मिशन योजना रे मध्य महानदी एवं तार उपनदी समूह सेगुडी को विशेष भाव में गुरुत्व दि जाइछि एवं तार अववाहिकार अवस्थित सरकारी राजस्व जंगल बेसरकारी व्यक्तिगत जमी रे व्यापक वृक्षरोपण मध्य करा जाइछि। एभली एक विशेष कार्यक्रम वरेण्य अतिथि को आमे आम गहन स्वागत करुछु।
आज आम सहित ओडिशा सरकार जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर मोना शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवार अधिकारी महोदय उपस्थित रही मुख्य अतिथि भाव एवं ओडिशार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं जंगल बाहिनी मुख्य श्रीयुक्त शिशिर कुमार रथ भारतीय वन सेवार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति आम पाइछु ओडिशार प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी तत्वावधारक श्रीयुक्त शशि पॉल महोदय को आम पाइछु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक MEOIV श्रीयुक्त ओम प्रकाश सिंह महोदय को आम कार्यक्रम प्रारंभ में आपण मान कही रखिबु आज राज्य स्तरीय विश्व वन दिवस उपलक्षे एक स्वतंत्र प्रदर्शनी उद्घाटन होईछि वरेण्य अतिथि करकमल आम साधुवाद देउछु एवं वरेण्य अतिथि को शुभेच्छा जनाई प्रथमे प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक आज कार्यक्रम आनुष्ठानिक शुभारंभ करने निवेदन करुछु जे अरण्य अंतर्गत दारू को आधार करी निजर अवयव निजर अपघन को महाप्रभु निजे धारण करिसेंती से दारू देवता उद्देश्य रे प्रदीप प्रज्वलन करी आज ए कार्यक्रम आनुष्ठानिक शुभारंभ करने वरेण्य अतिथि को आम विनम्रता पूर्वक निवेदन करूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम गरुडध्वजः माधवो काव्यो माधवो हरि स्मरन्ति साधवे नित्यं सर्वकार्येषु सर्वदा। पवित्र मंगलध्वनि मंगलाचरण मांत्रिक उच्चारण सहित प्रदीप प्रज्वलन करी आसरर आनुष्ठानिक शुभारंभ करिथिबा वरेण्य अतिथि निकट में आम कृतज्ञता निवेदन करुछु। उत्कल जननी आराधनार स्तबक वंदे उत्कल जननी जहाक उपस्थापन करिवे गुरु रजनीकांत महापात्र द्वारा प्रशिक्षित उदय संगीतायन नयागढ़ शिल्पी माने सहयोग रे तबलारे अनंत चरण साहू ऑर्गान रे रतिकांत त्रिपाठी एवं पैड रे अभिलाष मिश्र एवं परिचालना तथा निर्देशना रे विशिष्ट गुरु रजनीकांत महापात्र को एवं द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्री को आम स्वागत करुछु। वंदे उत्कल जननी गायन पाई आपण मान को विनम्र निवेदन दंडायमान होई उत्कल जननी को सम्मान प्रदर्शन करिवे। उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारु भाषमयि जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी जननी
1971 मसीह फूड एंड एग्रीकल्चर संस्था जोड़ा विश्व खाद्य संगठन तांकर गोटे प्रस्ताव रे पारित करथिले जे मार्च 21 को विश्व वन दिवस रूपे पालन करा जाऊ एवं ता विभिन्न स्तर रे राज्य एवं अन्य देश रे पालन हे आसुथिला किंतु 2011 मसीह रे दैट वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एवं तार परवर्ती वर्ष नवेम्बर 2012 रे जातिसंघर साधारण परिषद रे एक प्रस्ताव पारित करा जाय कहगला जे मार्च 21 रे जोटा कि हमर विश्व वन दिवस हिसाब रे पालन ही आस्तुला ताको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करिया पे यूएन जनरल असेंबली रे एक प्रस्ताव पारित हला एवं सेही अनुसार प्रथम जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हला 2013 रु समग्र विश्व रे पालन ही आसुची आ सेही कड़ी रे आज हमें 10म विश्व वन दिवस पालन करूछु। एई वर्षर जो थीम अच्छी बा विषय वस्तु बा फोकस रे जोटा रहउची सेटा होची फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जोटा को आम स्थायी उत्पादन एवं व्यवहार बोली ओडिया रे बुझी थाउ। एई जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन विषय रे जो आज आम 2022 रे चिंता करूछु हुए तो 30 वर्ष तले सेटा चिंता बा कोनसी वन विभाग बा राज्य सरकार भी ता विषय रे चिंता करि पार नथिले। आपण मानकर मने थिबो 1992 रे राज्य सरकार संपूर्ण भाव में फेलिंग बैन करथिले कारण सेतबेलर परिस्थिति बा सेतबेल जो जंगल अवक्षय होउथला ताको अटकेबा पई ताको प्रतिरोध करिया पई एंटायर जो हमर स्टेट फॉरेस्ट रे ग्रीन फेलिंग ऊपर बैन करा जायतिला एवं ऑलमोस्ट अबाउट 13 वर्ष पर 2005 रे ताको लिफ्ट करा जाय कि फेलिंग अलाउ करा गला एवं सही समय रे बहुत परिवेशविद कि किसी एक्टिविस्ट सेमानकर विशेष आशंका थिला जे आपण फेलिंग बैन को लिफ्ट करचंती राज्यर समस्त जंगल नष्ट हो जिवो बोली किंतु आई एम हैप्पी टू शेयर दैट सिंस 2007 वर्तमान सुधा 15 वर्ष हेलानी हमर जंगल रो जो वृद्धि घटी ईयर ऑन ईयर द फॉरेस्ट कवर इन ओडिशा इज इंक्रीजिंग एंड दिस ईयर जोटा कि 2021 रे हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रे जो रिपोर्ट बाहर थिला सेतरे फर्स्ट टाइम वी हैव क्रॉस 33% ओनली इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर रे हमर तो आगरु 33% आगरु थिला किंतु 2021 रे हम केवल फॉरेस्ट कवर रे भी 33% रु अधिका 33.5% हमर जंगल रहिछि ता सहित अनुमानिक प्राय 3 जोटा हमर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अछि। So the forest cover not only is increasing, but also the dense forest is also increasing in terms of hectare. Forestry, what a operation, it is a scientific based management, by science based management. तो forestry production जदि वृद्धि करा न जीव ताहले तार forestry बा science बा कोनसी रो आवश्यकता रहिबो नहीं। गोटे उपाय होची जे आमे जंगल रो कोनसी हार्वेस्ट करिवा नहीं एवं आमे व्यवहार करिवा नहीं। That is do nothing or touch me not policy जाको कहउचंती। The other one is we will do everything for the forest का productivity केमती बढ़ाइबा आ लोकंकर consumption भी बढ़ाइबा सेईटा को लोकन को फोकस को आनिबा पई एई वर्षर थीम जोटा डिसाइड हेची जे we must increase our sustainable production and when we are talking of sustainable production विशेष करी भारत रे आ हम ओडिसा रे भी working plan जोटा फॉरेस्ट the bedrock of forest management that is the basis of the sustainable production। हमर समस्त ओडिसा रे जो राज्य होची सेटा वर्किंग प्लान प्रेस्क्रिप्शन अनुसार जोटा कि भारत सरकार अनुमोदन करछन से अनुसार काम होची। सो वी कैन प्राउडली से ऑल आवर फॉरेस्ट इन ओडिसा आर सस्टेनेबली मैनेज्ड कारण 2014 रे जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड हमर तयारी छि जहार अनुसार हमर समस्त वर्किंग प्लान वर्तमान तयारी करा जाउची that the basis of that working plan code is sustainable management principles। एवं आज आमर डेट रे जो आमर 51 वनखंड अच्छी से प्राय 7 गोटी जो आमर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान होची और 44 वनखंड मध्यरु अनचार्ज्ड ऑलमोस्ट 39 फॉरेस्ट डिविजन्स वी हैव द अप्रूव्ड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वर्किंग इन द फॉरेस्ट। सेति आउ जो 5टा डिविजन आमर जोटा रही तार भी वर्किंग प्लान अंतिम स्थिति रे अच्छी जोटा कि कोरापुट करंजिया बालेश्वर भद्रक वाइल्ड लाइफ
এই চারটা ডিভিजन ର फाइनल स्टेज रे अछि आ जोटा पारला खेमडी सेटा वर्तमान ऑलमोस्ट पीडब्ल्यूपीआर तार सरीची सो वेरी सून वी होप that in another month or two all our forest in Odisha will be under sustainable production. Now when we are talking of sustainable production, there are certain management principle what we government would like to do. Production increase kariya pai earlier in 60s and 70s our focus thila on timber production. But now when we are talking of sustainable production, we are looking at all aspect of forest. जोथि pai ki amar ei asanta barsha jo amar campar APO hochi सेतिर किसी आम विशेष कार्यक्रम राज्य सरकार तरफ निया सेटा रोचे आमर वन्य सिल्क जो थी आम प्राय 73 गाँव में प्राय 11 कोटी रे प्रोग्राम करने प्रोग्राम रखीचु ता सहित आ गोटे स्वतंत्र पदक्षेप निया जोटा कि मेडिसिनल प्लांट औषधीय वृक्ष ताकू किपरि जंगल रे वृद्धि करा जीवो सेति विशेष ध्यान दिए जाए सेति अनुमानिक प्राय 12 कोटी रो आम इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव देइछु सरकार को एवं से दीटी सहित गोटे स्पेशल जोटा आमर नुआ आरंभ करछु फॉडर एंड फ्रूट बियरिंग ट्रीज कहीं आमर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पाई गुड़ाई जगार अनुभव होची जे फ्रूट एंड फॉडर अभाव रोची जंगल रे ताकू किपरि वृद्धि करबा सेति भी आमर प्राय आसंता वर्ष पाई आमे स्पेशल प्रोग्राम रखीचु जो द्वारा कि जंगल जो प्रोडक्शन बढ़िबा नॉट ओनली द टिम्बर प्रोडक्शन बट आल्सो द अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट को एक होल यूनिट नहीं कि आम प्रोडक्शन वृद्धि करने चेष्टा करूँ सहित वंस वी आर लुकिंग एट द प्रोडक्शन साइड बा सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट द अदर साइड इज कंजम्पशन रे आम जो जाए लोकों डिमांड आम वृद्धि करवा नहीं आपण मैंने अनुभव करेंगे आमर जेहेतु वुड रो यूज कमी जाइए ओवर द इयर्स नाउ द प्लास्टिक्स एंड स्टील एंड ग्लास पर्टिकुलरली यही 3टा व्यवस्था जो वस्तु वुड रो स्थान ग्रहण करने जो प्लास्टिक हैज एंटर्ड आवर लाइफ सो मच दैट वी डोंट नो हाउ टू लिव दैट बर्तमान बहुत जगह जो जेतोले कि 92 रे बैन ऑन फेलिंग रोथला बर्तमान अपन देखिए बहुत राज्य रे बर्तमान बैन ऑन प्लास्टिक चलानी प्लास्टिक बैन एंड द एफर्ट इज दैट वुड इज द मोस्ट आइडियल मटेरियल टू सब्स्टिट्यूट प्लास्टिक वेदर इन टर्म्स ऑफ बैग्स अपन माने निजे भी अनुभव करथुए बर्तमान प्लास्टिक बैग रे जेतो यूज को रोका जाउची ता जगह आमर पेपर बैग्स आसुची रीयूजेबल पेपर बैग्स गुड़ाक आसुची ता सहित विभिन्न जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रे विशेष करी घर बा ऑफिस सब गुड़ाक जोटा कि वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज टू बी मैसिव यूज ऑफ स्टील एंड ग्लास बर्तमान ता जगह भी वुड रो यूज करिया पई बहुत जगह चेष्टा करा जाउची सेंट्रल पीडब्ल्यूडी ता सहित ओडिशा पीडब्ल्यूडी भी सेमाने तांकर कोड रे परिवर्तन करिक जेमति वुड को यूज करा जाय परिवो सेति भी सेमानकर पॉलिसी डिसीजन बा गाइडलाइंस गुडा इश्यू करिसंती सो द बेसिक एफर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट इज टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वुड बिकॉज वुड इज नॉट ओनली ए गुड बट आल्सो इट्स ए कार्बन सिंक सेति सेटा हमर चिरा सब बेले प्रचेष्टा रहउची जे फॉरेस्ट जो प्रोडक्शन बाहर वुड रो ताको किपरि वृद्धि करिवा ता सहित विशेषकर आम फोकस रोची जे जो वुड गुड़ाक ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया बाहर जो गुड़ाक अच्छे विशेषकर राज्य सरकार प्राय 60टी स्पेसीस जो ट्रांजिट परमिट फ्री करचंती विशेष आकाशिया हला यूकालिप्टस हला जो मानक लोकंकर स्मॉल टिम्बर रे यूज आसुची ताकू किपरि वृद्धि करा जीवो सेही पई आमे विशेष ध्यान दउछु एवं से ताहार किपरि लोक मानक पाखरे पहुंचीबो लोक मानकर यूज बढ़िया पई अति निकट चलित वर्ष सरकार पुणी बैम्बूर आमर जो यूज थिला जो गुड़ा बैम्बू फॉरेस्ट गुड़ा वर्किंग बहुत जगह बंद हो जाइथिला ताकू सरकार वर्तमान विशेषकर एलाउ करचंती जे वन संरक्षण समिति जो गुड़ा अछंती सेमाने चाहिले तांकर व्यवहार पाई एवं बिक्री पाई भी बैम्बू फॉरेस्ट गुड़ा करे सेमाने हार्वेस्ट करि परिबे एवं तार जो टेक्निकल सपोर्ट रहउची सेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दबो या द्वारा आमर जो VSS अच्छे गाँव मान ग्राम कमिटी जो मैंने अच्छे दे विल बी नॉट ओनली दे टेक्निकली अपग्रेडेड बट आल्सो तांकर जो डेली जो रिक्वायरमेंट रहउची इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टिम्बर सेटा तांकर बाउंसरु समान निर्धारित हिसाब रे मीट करि परिबे दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स व्हाट वी आर टेकिंग टू मीट द सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द वुड प्रोड्यूस आई होप इन द डेज टू कम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल rise to the occasion and our productivity of the Odisha forest will also increase. Before I conclude, I once again thank the State Forestry Awards
जो माने कि वर्तमान पुरस्कार प्राप्त करिया जाउछंती एवं ता सहित मो राज्य सरकार को भी वन विभाग तरफ धन्यवाद देवी जे चलित वर्ष सेमानकर जो प्राइस मनी थिला ताकू द्विगुणित करिसेंती सेथि मो राज्य सरकार को भी बहुत वन विभाग तरफ धन्यवाद दउची एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू। ओडिशार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं जंगल बाहिनी मुख्य श्रीयुक्त शिशिर कुमार रथन को आम कृतज्ञता अर्पण करुछु। विशेष भाव में राज्यस्तरीय विश्व वन दिवस उपलक्षे ये कार्यक्रम अभिप्राय एवं आभिमुख्य संपर्क में आम समस्त अवधारणा प्रदान करिसेंती। एहा परे परे आमे आपण मानक पई रखिछु आज रे विशेष कार्यक्रम में विश्व वन दिवस उपलक्षे एक स्वतंत्र वृत्तचित्र आम जीवन रेखा जहाँ प्रदर्शित है आपण मानक पई। पहाड़रू नदी आसे जेबे बही केते मोड़ पुणी केते जे बुलाणी माटी जमी जंगल केते पशु पक्षी एठी चढ़ा चंचल से आम जीवन रेखा आम पाई शुभ मंगल ताकू आमे जाड़ी पोड़ी काटी डाकी आणु जेते परा भव निरीहा पशु को करू जे शिकार करू नाही केबे आमे जे विचार सबुज अरण्य हेलाणी धूसर आम भविष्यत आजी अंधार दिने समय करिब विचार आसो आजी आमे शपथ करिबा हाथे रखी आमे हाथ जंगल रहिले
विश्व वन दिवस उपलक्षे यही स्वतंत्र वृत्त चित्र आपण मान द्वारा गृहीत होईछि अनेक अनेक साधुवाद देउछु। या परे परे ओडिशार प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं मुख्य वनप्राणी तत्वावधारक माननीय श्रीयुक्त शशिपाल महोदय को निवेदन करिबो उद्बोधन पाई। Respected ACS Madam, PCCF and HOF, Shri Gopi Singh, my colleagues from the department, friends from media, and ladies and gentlemen, समस्तों को मो नमस्कार जनाउछि। सर्वप्रथमे आज विश्व वानिकी दिवस रे आपण मानकु अभिनंदन जनाउछि, शुभेच्छा जनाउछि। बंधुगण, आज जदि थीम जितेबाला मु देखुछि फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सेतेबाला हठात जितेबाला आम चाकरी आरंभ करथिलु 90s बेलू से समयटा मन पड़ जाउछि। से समय रे कौन होतिला आपण माने जी मोर वर्किंग कलीग से समय अछंती से माने भल भाव अनुभव करछंती। सेतेबाला जंगल ऊपर बहुत प्रेशर रहउथिला, काठ पई जाळनी काठ पई सबु बळे डिपार्टमेंट रो मैक्सिमम एनर्जी एफर्ट जाउथिला ताकू केमती कंट्रोल करिवा, केमती चेक करिवा, किंतु बहु परिमाण रे सफलता मिलु नै थिला। किंतु तापरे जेमती जेमती समय पारिगला सेतेबेले जहाँ आपण माने भी जे सेतेबेले देखिछंती का हठात रे 200-300 लोक पळे आसीबे, मारणास्त्र धरिकरी आसीबे, माड़गोळ लागुथिबो। सब बेले केते हमर भाई माने डिपार्टमेंट रो तांकर जीवन हराइछंती जंगल सुरक्षा पई से समय रे। किंतु जेमती जेमती समय टिके पास हैला, हमर 21st सेंचुरी आरंभ हैला, परिस्थितिटा टिके बदलिला। जेमती आपण हमर पीसीसीएफ एंड ऑफ कहले, वर्तमान जो हमर मॉनिटरिंग होउछि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तरफ रु प्राय 10 वर्ष हे गलानी। 5टा रिपोर्ट, जो रिपोर्टटा कि प्राय 2 वर्ष को गोटे थारे आसे, गत 5टा रिपोर्ट रे आम राज्य रे जंगल वृद्धि पाई चलीछि। परिस्थितिटा पूरा चेंज हो गला। जहाँ हम 80s 90s रे जहाँ अनुभव करथिलु सेटा वर्तमान बदली गला। गोटे दृष्टि कहले आमे सस्टेनेबल लेवल को पहुंची आसिलु कहले भी चलिबो, कहीं हमर जंगल परिमाणटा जतेकी अछि सेतेकी रहला कि ताठू वृद्धि पाउछि आउ कमु नाही। जतेकी ता भितर आमे एक्सट्रैक्ट करूछु ताठू बेसी आमे ऐड करूछु। सो हमर जा कैपिटल अछि सेटा आउ कमु नाही। जदि आमे ताकर कारण विषय चर्चा करिबा ताले जेमती हमर पीसीसीएफ एंड हॉफ कहले, गोटे मुख्य कारण हैला सब्स्टिट्यूट गुडाका, प्लास्टिक, स्टील, ये सब जिनस गुडाका जो आगु सब काठ व्यवहार होतला ताकू रिप्लेस कर देले, जोटा कि हमर पर्यावरण पई एते भलो नाही, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नाही। आ गोटे जोटा मुख्य रीजन ये हमर ये स्टेज आसीबा पई अछि, सेटा होछि हमर राज्य सरकार कर जहा केते गुडाका नीति रहला। आपण जदि 80s 90s कथा चिंता करिवे, सेते बेले लोक पाखरे जो गाँ गंडा थिले, जो जंगल पाखरे लोक रहुथिले, तांको पई लाइवलीहुड थिला बड़ इश्यू। बहुत लोक पई लाइवलीहुड किछि इश्यूज, लाइवलीहुड गुडाक पाउ नथिले, बाध्य हेकरी तांकर सुजोग नेकरी जो काठ माफिया गुडाक थिले से लोक मानको प्रलोभन देकरी जंगल काटिबारे लगाउथिले, ताठू काठ नेकरी व्यापार करुथिले, लाभ पाउथिले। ये लोक गुडाका प्रकृति रे से चोरी कामटा करबा को चाहू नथिले, किंतु बाध्यतामूलक कहीं कि तांका पाखरे आ चलिबा पई किछि साधन नाही बोले सेटा करबा को बाध्य होउथिले। किंतु वर्तमान आपण देखंतु जेमती जे स्कीम गुडाका राज्य सरकार जोटा इंट्रोड्यूस करला, जो थरे कि लोक मानक जेमती एमजीएनआरजीएस हैला, जोठी भी चाहिले लोक
तापाई रोजगार पाई परिवे जेमती हमर बिजू पक्का घर योजना हैला बिजू पक्का घर योजना नाले आगु जो कच्चा घर हेले आपण जानछंती सब वर्ष ताको पई रिपेयर दरकार पड़े काठ बल्ली दरकार पड़े जाटी माटी दरकार पड़े सब जिनस गुड़ाका दरकार पड़े सो सेते पक्का घर हे जिबारु से दरकार गुड़ाका आउ पड़े नाही सेटा भी हमर फॉरेस्ट कंजर्वेशन रे साहाय्य हुए तापरे आउ गोटे बड़ कारण जोटा हमर रहउथिला जल काठ बाध्य रे जते भी लोक थिले गाँ रे थांतु टाउन रे इवन ढाबा आपण देखंतु ठेला देखंतु जते कि सेते बेले देखुथिबे समस्ते जालनी काठ ऊपर निर्भर करथिले वर्तमान आपण जदी देखिबे आपण आओ को ढाबा ठेला ए जालनी काठ व्यवहार करवाटा देखिबे नाही सेम परिस्थिति हमरा जंगल पाखा पाखरे जो गाँ गुड़ा अच्छी सेतरी भी हेची जो हमरा जो कुकिंग गैस सप्लाई स्कीम गुड़ा अच्छी से स्कीम जो बहुत गुड़ा काठ जालनी काठ रिप्लेस हो गलानी जालनी काठ एक्सट्रैक्शन आम जंगल पाई बहुत ही हानिकारक होता कहीं से सब छोट छोट जो पोल क्रॉप थिला जोटा कि आमर विख्यात जो गछ गुड़ाक थिला ताकू बेसी लोक काटुथिले जेमती आपण आगु आपण माने समस्त लक्ष्य करथिबे आगु जेतेबेले भी जो रोड रे गले जो पटे गले लोक मिलिछि किंतु जहा मो पूर्व वक्ता भी कहले जो हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली जिनस गुड़ाक जो आम रिप्लेसमेंट हिसाब रे वुड सब्स्टिट्यूट हिसाब रे जो आम वर्तमान व्यवहार करबा पई लागिछु ताकू आमे को औथरे दुरैबो को पड़िबो हमको औथरे काठ व्यवहार अधिका करबो को पड़िबो ता पई हमरो प्रोडक्शन जेमती आमे जो जंगल परिमाण बढ़े चलीछु आउ ताकू टिके अधिका परिमाण रे बढ़ाइबो को पड़िबो ता संगे संगे हमको वर्तमान जंगल परिमाण बढ़िवा एटा एक्चुअली ग्रीन कवर बढ़िवा गछ संख्या बढ़िवा सेटा ठीक अछि किंतु बहुत गुड़ा का हमरो उजड़ा जंगल अच्छी तार पुनर्धार पाई भी हमको दरकार अच्छी आउ हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वर्तमान इट इज नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ ट्रीज इट्स नॉट जस्ट असेंबलेज ऑफ ट्रीज इट हैज टू बी अ फुल फ्लेज्ड इकोसिस्टम सेठी जहा हमरो जो भी जैव विविधता रहे सब प्रकार जैव विविधता जेमती फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे रहबा कथा सेटा रखिबा दरकार सो वर्तमान आमे जो स्टेज रे पहुंची छु जो सफलता आमे हासिल करूछु से मैनग्रोव फॉरेस्ट हो कि से हमारा अदर फॉरेस्ट हो सेटा को हमको आगेबो को नेबो को पड़िबो हमको जंगल गुड़ा को पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हिसाब रे जोथरे की सब प्रकार स्टेज रो गछ थिबो जोटी की जीवजंतु थिबो जोटी की बायोडाइवर्सिटी रो भलो असेंबलेज थिबो से गुड़ा का हमको अचीव करबा को अच्छी सो वर्तमान हमको सेकंड जनरेशन जो हमर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट इश्यूज अच्छी हमको से दिगरे आउट जोर सोर रे काम करबा को पड़िबो सो दैट खाली हमर जंगल परिमाण बढ़े नहीं क्वालिटी ऑफ जंगल जोटा अच्छी सेटा भी इक्वली इंपोर्टेंट अच्छी हमें ताकू भी इक्वली गुरुत्व देकरी बढ़ाइबा को अच्छी सो मु आशा करूची जहाँ भी हमर भाई माने जंगल रे काम करछंती डिपार्टमेंट रे खटुछंती हमको लोकल कम्युनिटी माने जोटा कि साहाय्य करछंती प्रेस एंड मीडिया जोटा कि से विषय सचेतनता आनिबा पई चेष्टा सब बेले करछंती से माने एमती मिलित उद्यम करथिबे आमे आसंता किछि वर्ष भितरे जहाँ हमारा आइडियल सिचुएशन आमे नंबर हिसाब रे जेमती पीसी से महोदय कहले नंबर हिसाब रे आमे 33% जंगल ट्रीज आउटसाइड छाड़ी करी जंगल खाली हमर जो नेशनल पॉलिसी हिसाब रे 33% रहबा कथा सेटा हमें ऑलरेडी अचीव करिछु सो वर्तमान हमर मोर फोकस विल बी ऑन क्वालिटेटिव थिंग्स ताकू जहाँ प्रकृति रे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हिसाब रे जेमती डेवलप करबा कथा सेटा पई मोर दृढ़ आशा हम समस्त मिसिकरी से दिगरे काम करले हमें क्षेत्र भी सफलता हासिल करिवो पुणी थारे आपण मानको अभिनंदन जणाई करी मो वक्तव्य शेष करूची धन्यवाद। ओडिशार प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी मुख्य वनप्राणी तत्व बधारक माननीय श्रीयुक्त शशिपाल महोदय ए उत्साहप्रद संबोधन पर आम कृतज्ञता अर्पण करुछु। परे मंच मंडन करिथिबा वरेण्य अतिथि कर कमल दुई गोटी स्वतंत्र पुस्तकर उन्मोचन हेब। प्रथमे आम अनुरोध करिबु हाइलाइट्स ऑफ फॉरेस्ट्री सेक्टर 2022 यार आनुष्ठानिक लोकार्पण करिबा पई आम निवेदन करिबु मुख्य अतिथि एवं मंच मंडन करिथिबा सम्मानित अतिथि वृंद को। हाइलाइट्स ऑफ फॉरेस्ट्री सेक्टर विश्व वन दिवस उपलक्षे
ओडिशा सरकार जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत होइथिबा एही पुस्तिका हाइलाइट्स ऑफ फॉरेस्ट्री सेक्टर 2022 आनुष्ठानिक पाठकार्पण होउछि आमे अभिनंदन जनाउछु। परे परे साइटेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट्री अवार्ड विनर्स 2022 जो माने चलित वर्ष स्टेट फॉरेस्ट्री अवार्ड विनर से विशेष भाव में अवदान को नहीं एक पुस्तिकार प्रकाश पाई जार आनुष्ठानिक पाठकार्पण लोकार्पण करुछन्ति बरेण्य अतिथि। बंधुगण आज विश्व वन दिवस उपलक्षे राज्य सरकार तरफ स्टेट फॉरेस्ट्री अवार्ड 2022 प्रधान उत्सव वर्तमान समाहित हेब एवं वरेण्य अतिथि द्वारा संबर्धित हेबे चलित वर्षर स्टेट फॉरेस्ट्री सम्मान रे विभूषित हेबाकु जाउथिबा विशिष्ट वन सेवाधारी अधिकारी एवं कर्मचारी आमे सेमानकु स्वागत करूछु। प्रथमे श्रीमती जयश्री मुर्मू फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर देवगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन जयश्री मुर्मू को आम अभिनंदन जनाइबू। श्रीमती जयश्री मुर्मू रेंज ऑफिसर बारकोट रेंज ऑफ देवगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन has done excellent job in the field of forest protection, afforestation and wildlife management. She was successful in arresting the accused person by utilizing the pictures captured in the camera trap. श्रीमती जयश्री मुर्मू को आमे अभिनंदन जनाऊँ। जयश्री मुर्मू को जे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बारकोट रेंज देवगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन आज एठारे संबर्धित होउछन्ति। अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ जयश्री को। परे परे आमे श्री सिद्धार्थ शंकर साहू फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बरमपुर फॉरेस्ट डिवीजन श्री सिद्धार्थ शंकर साहू आम ये कही रखू जो माने संबर्धित होती समस्त को 10,000 टंकार अर्थराशि सहित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन एवं मेडल प्रदान करुछन्ति वरेण्य अतिथि। सिद्धार्थ शंकर साहू फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर खलीकोट रेंज has been showing outstanding performance in forest protection, joint forest management, afforestation activities, wildlife protection and management during his tenure in Khalikot range of Barampur Forest Division. He has contributed significantly to the development of wildlife habitat, especially in the case of black buck. श्री सिद्धार्थ शंकर साहू को आम अभिनंदन जनाऊँ। परे परे स्वागत करिबु श्री अनंत चरण परिडा फॉरेस्टर केउंझर वाइल्ड लाइफ डिवीजन श्री अनंत चरण परिडा। श्री अनंत चरण परिडा फॉरेस्टर has worked with full devotion in different ranges of Keonjhar Wildlife Division. He gave his best effort in relocating 95 families in first phase and 75 families in second phase from different villages of Hadagad Wildlife Sanctuary. Anand Charan Parida Forester Keonjhar Wildlife Division ru ame tanku abhinandan janauchu ebong pare pare Sri Dhoba Rana Titlagarh Division of Forester, Titlagarh KL Division, Devgarh Range, Sri Dhobarana. Forester in Devgarh KL Range of Titlagarh KL Division has done excellent work in the field of production and processing of kendu leaves. Because of his sincerity and dedication, he was able to achieve a very high value of average sale price. This is a great indicator of quality processing, binding and bagging of kendu leaves. आमे श्री धोबारणांक आपण मानकर करताली मागी नेबू फॉरेस्टर टिटलागढ़ डिवीजन एवं देवगढ़ रेंजर परे परे श्रीमती कल्पना कुमारी प्रधान फॉरेस्टर आस्का रेंज घुमुसर साउथ डिवीजन फॉरेस्टर ऑफ घुमसर साउथ डिवीजन श्रीमती कल्पना कुमारी प्रधान has achieved great performance in the field of forest protection, wildlife management and joint forest management. Due to her sincere efforts, the survival percentage in the plantation raised by her during the current year is 100%.
She was also responsible for rescue and release of 5 number of black box. हमें श्रीमती कल्पना कुमारी प्रधान को बधाई जनाऊँ परे परे श्री रंजन कुमार जीत फॉरेस्टर फ्रॉम बडरमा रेंज एंड बामरा डिवीजन wildlife. Sri Ranjan Kumar Jeet, forester of Badrama Wildlife Range under Bamrat Wildlife Division, is an active, dynamic and diligent, obedient and dedicated forest staff, and he has his effort and contribution in the restoration of the forest and in the participation and coordination in various wildlife census programs. आमे श्री रंजन कुमार जीत को बधाई जनाऊँ ये सम्मान लाभ करिथिबारु परे परे श्री शिवानंद लेंका forester from Balimela range and Malkanagiri division. Sri Shivananda Lenka, forester, is a sincere, hard-working forest staff. He has recently rescued 1 crocodile in the village Sadasipur and 1 sloth bear in the village MV20. He has been instrumental in raising different variety of rice and forestry species in the private fields of local villages in Balimela NAC. Sri Lanka has carried out successful plantation under various schemes like Urban Economic Avenue Plantation and Miyawaki Campaign. हमें श्री शिवानंद लंका को बधाई जनाऊँ परे परे श्री शिवनारायण माझी फॉरेस्टर फ्रॉम कोमना वाइल्डलाइफ रेंज and Sunabeda Wildlife Division. His contribution in the field of protection, anti-smuggling measures and anti-poaching squad has been commendable. He has been conducting regular foot patrolling and preventing forest fire inside the sanctuary. शिवनारायण माझी को कोमना वाइल्ड लाइफ रेंज एवं सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ डिविजन फॉरेस्टर को आमे बधाई जनाऊँ परे परे श्री आनंद बिहारी स्वाई forest guard from Bangomunda range and Balangir forest division. Anand Bihari Swami, forest guard of Balangir forest division, contributed a lot towards protection of the forest through awareness in different forest fringe villages. He is found to possess scientific approach in plantation activities and has raised many successful plantations. In the field of wildlife management, he was responsible for rescue and release of 1 barking deer and 1 golden eagle. And he has been especially trained in camera trapping for tiger and other wild animals. Sri Ananda Bihari Swami को मैं अभिनंदन जनाऊँ परे परे श्री दीपक रंजन पटनायक, forest guard from Brahmuni गांव, Baliguda forest division. Sri Deepak Ranjan Patnaik, forest guard of Baliguda forest division, has done very good work in the field of forest protection, wildlife management, and he has ensured regular patrolling in his area, as a result of which the wild animals have got complete protection from poachers. He was also responsible for rescue and release of 1 pangolin and 1 spotted deer. हमें श्री दीपक रंजन पटनायक को अभिनंदन जनाऊँ. Sri Naresh Kumar Sethi, forest guard from Kaptipada range and from Baripada forest division. Sri Naresh Kumar Sethi, forest guard, has been doing excellent work in Similipalo Tiger Reserve area. Because of his techno-savvy attitude, he has produced many videos on Anukampa app, Census app, OFMS app, which have proved highly beneficial to the forest department. Because of his persuasion with the members of Scout VSS, 13 country-made guns have been surrendered by the poachers of the area. हमें श्री नरेश कुमार सेठी, फॉरेस्ट गार्ड, बारीपदा फॉरेस्ट डिवीजन को अभिनंदन जनाऊँ. परे परे श्री प्रकाश सरकार, फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम देवगाम रेंज, नवरंगपुर फॉरेस्ट डिवीजन. He is a sincere, hard-working and disciplined worker, and encroached forest has been freed from encroachers by Sri Sarkar, where afforestation activity has been taken up. Supply of LPG gas under Ujjola scheme to VSS members was a great effort by which pressure on natural forest has been minimized. हमें श्री प्रकाश सरकार को फॉरेस्ट गार्ड नवरंगपुर फॉरेस्ट डिवीजन को अभिनंदन जनाऊँ. परे परे सुश्री पुष्पांजलि नायक, फॉरेस्ट गार्ड ऑफ रायगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन of Patraguda range, is a sincere, hard-working and disciplined worker. She has raised very good plantation in different schemes. The survival percentage in the plantation varies from 92 to 98%. Regarding her performance in the field of
forest protection, it is noted that she is responsible for 5 number of PR cases, 113 number of OR cases and seizure of large quantities of timber, bamboo and firewood. आमे सुश्री पुष्पांजलि नायक फॉरेस्ट गार्ड पात्रगुड़ा रेंज एवं रायगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन को अभिनंदन जनाऊछु। सुश्री रूपाली पृष्टि फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम खुंटुणी of Atgad Forest Division. Ms. Rupali Prushti, Forest Guard, has put up a great performance in detection of large number of forest offence cases. She has successfully conducted many cases of house search and effected recovery of seized materials. And she has been instrumental in taking anti-depredation measures on wild elephants coming from neighboring forest areas during the crop season and managing man-animal conflict during the period. Because of her sincere efforts, there was no casualty of wild elephants and human beings. आमे अनेक अनेक बधाई जनाऊछु आठगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन रूपाली पृष्टि को परे परे श्रीमती सबिता साहू फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम बडमाल ऑफ रेडाखोल फॉरेस्ट डिवीजन. Srimati Sabita Sahu, Forest Guard of Badmal Range of Redakul Forest Division, has done very good work in the field of forest protection, wildlife management and joint forest management. She participated in large number of forest raids and arrest of 8 number of accused persons. She has done great work for forest fire mitigation and conducted large number of awareness meetings for prevention of forest fire. Srimati Sabita Sahu को हमें बधाई जनाऊछु रेडाखोल फॉरेस्ट डिवीजन सहकर्मी को. श्री शिवराम सावत फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम देवगिरी रेंज एंड Paralakemundi forest. He has done very good work in the field of forest protection, wildlife management and joint forest management. He is very good in catching snakes and he has utilized this ability to remove and rescue snakes from the houses of common people. He also participated in large number of forest raids resulting in seizure of JCB, tractor, tipper, etc. शिवराम सावत को अभिनंदन जनाऊछु. परे परे सुश्री सिनिस्मिता मराई फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम बारकोट रेंज देवगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन. मिस सिनिस्मिता मराई फॉरेस्ट गार्ड of Devgarh Forest Division has done very good work in the field of forest protection, wildlife management and joint forest management. She participated in number of forest raids and arrest of number of accused persons. Her performance in the field of afforestation has been very good and the survival percentage in the plantation raised by her is above 95%. Miss Sinismita Marai Forest Guard को हमें अभिनंदन जनाऊछु. परे परे श्री सुनील रंजन राउतराय Forest Guard from Kanika Wildlife Range, Rajnagar Wildlife Division. He is a young, dynamic and highly enthusiastic frontline staff who is an asset for the forest department. He has been instrumental in adopting new technological initiatives like DGPS mapping of forest areas, OFMS module for fieldwork execution, camera trap installation for wildlife monitoring, intensive use of patrolling and ecological app for enforcement and wildlife estimation activities. से सुनील रंजन राउतराय फॉरेस्ट गार्ड को राजनगर डिवीजन रे हमें बधाई जनाऊछु. परे परे श्री शुभेंदु भुइया फॉरेस्ट गार्ड शिंकोल बीट हिंदोल रेंज ढेंकानाल फॉरेस्ट डिवीजन. He is a very sincere worker and because of his sincere efforts 20 number of OR cases, 30 number of UD cases related to timber and 15 number of OR cases and 29 number of UD cases related to wildlife have been booked by him. He is also a very good sports person. आमे स्वागत करूछु श्री शुभेंदु भुइया को ढेंकानाल फॉरेस्ट डिवीजन रे आज संबर्धित होइथिबारु. एवं परिशेष रे श्री उमाकांत साहू फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम बलांगीर केएल फॉरेस्ट डिवीजन. Sri Umakanta Sahu, Forest Guard, is an excellent worker in the field of production and processing of kendu leaves. Because of his sincerity and dedication, he was able to achieve a very high value of average sale price. This is a great indicator of quality processing, binding and bagging of kendu leaves. This also reflects the high level of trust reposed by kendu leaves purchasers in the ability of Sri Umakanta Sahu. आमे समस्त संबर्धित अधिकारी मानकु विशेष भाव रे आमे कृतज्ञता जनाऊछु एवं अभिनंदन जनाऊछु सेमानकर उपस्थिति पई. एवं एहा परे परे आमे अनुरोध करिवो
आम सहित संयुक्त अच्छा मुख्य अतिथि भाव में ओडिशा सरकार जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर मोना शर्मा महोदय जहां मार्गदर्शन में विभाग सफलतार गोटे पर गोटे सरणी को अतिक्रम कर गोटे पर गोटे पाहच को अतिक्रम कर आगुसार होईछि। माननीय डॉक्टर मोना शर्मा महोदय को आम निवेदन करूँ आसर को संबोधित करेंगे राज्य स्तरीय वन दिवस विश्व वन दिवस उपलक्षे ए समावेश में। आज उत्सव रे उपस्थित समस्त अतिथिगण मान को मोर शुभेच्छा मोर अभिनंदन। आम बहुत खुशी कथा अच्छी। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस that Odisha has 33% of the geographical area under forest covered. The national average is 24%, and as a country, we want to make it as 33%. So in the latest survey, the forest, we have reached the milestone of 33% of the geographical area as the forest area, which is very good. Secondly, we have the fourth largest forest area in the country. After Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Odisha has the fourth largest forest area. The mangrove forests of Odisha are very rich in biodiversity. The mangrove area is less, but the mangrove biodiversity is very, very rich. And in the last survey, last report which was released, we have added 8 square kilometers of mangrove in our state, which is much more than achievement of any other state. And we are all aware that these mangrove are the best protection against the cyclone. So the forest, the rich forest that we are having are not only adding to the rich biodiversity, wildlife, but they are also protection to us against the climate change. They mitigate the adverse effect of the climate change. And even in terms of the carbon sinks, Odisha is at number 4 in terms of the carbon sinks in the forest. So all these things have been possible because of the hard work done by each and every one of you with the support of the community. Odisha was a pioneer state to introduce joint forest management, and it has given us very good results despite the constraints. Under the transformative agenda of the state, under 5T, the state has decided to take the JFM, joint forest management, to the next level. So when we are talking of the next level, आमे चाहूँ छु कि जो जितने JFM माने अछंती, we will increase the number of JFMs. We will also increase the area which is being managed by them. As of now, about 25% of the forest area is being managed by the JFMs. We will make it double in a time-bound manner, and we will also try to see that we convert our open forests into moderate and dense forests by associating the JFMs in the process. The second priority for the government is to give the livelihood support. जेमिति आपण समस्त माने जानिथिबे कि हमरो इत्ते फॉरेस्ट जो बढी छी, this has been possible because of alternative livelihoods, alternative sources of materials available to the people. So the pressure on the forest has come down, which has been reflected in the what PCF said, PCF wildlife, and we all know also. So the pressure on forests have come down. So we will also give much more livelihood opportunities to the local communities. And for this, we will have, under the OFSDP project, we are already doing a lot of activities. But in addition, we will work closely with Mission Shakti and also with the SC/ST department. Now, the SC/ST department is working out a scheme for the minimum support price for the minor forest produce. So the role of the forest department will be to increase the production and productivity of the minor forest produce. So we have a key role to play when we are talking of the livelihood support to the local communities. So forest department has got a key role to play, and I've got no hesitation in saying that all of you have been doing excellent job, excellent work in terms of protecting the forest, conserving and doing the development work. I would like to say 2 more things since the temperatures have already started rising. So along with the celebration, we are aware of the huge responsibility on us for prevention of forest fires. So I would like to compliment my field officials and all the senior officers for the alertness with which they have been working, and the regular interaction that we are having with the community, whether the Panchayati Raj institutions, the SHGs, the local groups, NSS volunteers. So I'll appeal to all my officers and the field functionaries to continue this interaction with the community in a very, very aggressive manner so that we prevent the forest fires. And in addition, as we have been doing, we'll continue to take immediate action as and
when we receive the fire alerts from the FSI. So I appeal to all officers to be as alert as we are and ensure that we minimize the incidence of forest fires, and we also take timely action as and when they are reported to us. The second important action point for us right now is the soil and moisture conservation activities. As you are aware, this is a working season, and today we get a lot of funds not only from CAMPA but also from NAREGA, from DMF, from AMBETSI, and many other schemes. And this is the right time. So I'll appeal to all my officers, my functionaries, who have been doing excellent work. In fact, when I was giving the award, it was so inspiring to hear that all of them have worked in different fields and done excellent job. What 5T that we talk about, they are implementing that 5T at their level. So we should make the best use of funds available to us under these ongoing schemes. We will use them effectively and efficiently to see that we conserve as much of water as possible, and that will definitely lead to the improvement in the forest growth. I congratulate all the award winners once again for their exceptional work, not only for wildlife, forest, but also for the Kendu leaf, which is a very important sector in our state. It gives employment to the poorest of poor during the lean period, and we give good, since we are processing the Kendu leaf, whatever profit is generated, we give it back to the pluckers and the people who are working in the field of Kendu leaf. I'm sure that all of us individually and collectively will continue to strive for excellence to preserve, to protect, and to develop our forest, and making the communities a partner in that process. Thank you very much. Vande Utkal Janani. Thank you. विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर मोना शर्मा महोदय मुख्य अतिथि को पुणी थे आम कृतज्ञता अर्पण करुचु। आज संवर्धित होइथिबा समस्त बंधु मान को आम मंच को अतिथि सहित गोटे दलगत फोटोग्राफ निवेदन करूँ। तेज ता पूर्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एमई एंड आईवी श्री ओम प्रकाश सिंह महोदय को अनुरोध करूँ आनुष्ठानिक धन्यवाद अर्पण पाई। It's my proud privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries on the dais, the award winners, and all the ladies and gentlemen who have participated in this function. First of all, I'm extremely thankful to our ACS ma'am, who despite her busy schedule has come to this function and spoken great words not only to the award winners but to the whole society of the state of Odisha. We are really thankful, madam, for your sparing the time for this function. I am extremely thankful to our PC Chef and Hof, Sri S.K. Rath, because of his guidance for organizing this function in a very great manner. And I would also like to tell that he was the brain behind all the details of this function. So I am doubly thankful to our PC Chef and Hof, Odisha. Sri Shashi Paul, PC of Wildlife, I am really thankful to you, sir, because of very short notice given to you, and you have kindly agreed to attend this function. We are really thankful to you. I am thankful to all the forest officers, the serving officers and the retired officers who have spared time to attend this function and make the function a great success. The award winners and the family members, we are really thankful to you, not only because you came here, but also your presence added to the glitter of this function. So thank you all the family members of the award winners and the award winners themselves. I would like to thank all the members of electronic and print media who have covered this function in a very graceful manner, and I am sure their coverage would go a long way in spreading the message of today's World Forestry Day. For the last about 10 to 15 days, the officers of DFO City Division, DFO Chandaka, and RCC of Bhubaneswar, they have been working tirelessly to make this function a grand success. So I must say
thanks to all those who are present and who are not present, but because of their tireless work, this function has become a great success. I would also like to thank our officers of PCF office, especially Sunita ji, who has worked really tirelessly for the past so many days, and she was instrumental in making this function a great success. Last but not the least, our anchor, Sri Mrityunjay Sahab, whose presence made a great change and a great thing to this function. So I am also thankful to you. Once again, thanks to one and all. Dhanyavad. Jai Hind. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ओम प्रकाश सिंह महोदय सुंदर धन्यवाद अर्पण पाई आम साधुवाद देउछु एवं आज संवर्धित होइथिबा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे रे अवार्ड विनर्स बंधु मान को आम मंच रे स्वागत करिवु वरेण्य अतिथि सहित गोटे दलगत फोटोग्राफ रे से संयुक्त हेबे ग्रुप फोटोग्राफ्स ऑफ अवार्ड विनर्स विथ द डिग्निटरीज ऑन द डायस निश्चित रूपे सेमानकर जो कर्तव्य परायणता रही एवं जो निरलस सेवा से संपादन कर आसुंच आम वन संपदर सुरक्षा पाई एवं तार विकास पाई से माने आहुरी अधिक उत्साहित हेबे आज वरेण्य अतिथिंकर गरिमामय उपस्थित रे सेमानकर ये दलगत फोटोग्राफ सेमानक घरर कांथ को केवल शोभित करिवो नाही बरं सेमानकर वृत्तिगत जीवन रे आहुरी अनेक किछि प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देव हृदय सिंधुकरे मध्य साहित्य होई रहिबो जहाँ सेमानक आहुरी कर्तव्यनिष्ठ हेबा पई प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देव आमे समस्तको अभिनंदन जणाउछु वरेण्य अतिथिंकर गरिमामय उपस्थिति रे सेमानकर ए उपस्थिति को मध्य आमे अभिवादन जणाउछु एवं सर्वोपरि आज कार्यक्रम को सफल करने दिगरे आपण मानकर जो भली सहयोग रही जो बंधु मानकर विशेष भाव में उपस्थिति रही समस्त को ये सफलतार श्रेय आम प्रदान करुचु एवं लाइव स्ट्रीमिंग माध्यम रे यूट्यूब एवं फेसबुक रे संयुक्त होइथिबा हमर समस्त दर्शक मान को आम साधुवाद देउछु सर्वोपरि ये सफलतार श्रेय आपण मान को प्रदान करी गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु को साधुवाद दे जयदेव भवन प्रेक्षालय दायित्व रही समस्त सहयोगी बंधु एवं मंचमंडन करिथिबा समस्त अतिथि को पुणी थे साधुवाद कृतज्ञता दे एक भव्य करताली रे अभिवादन जनाउछु एवं आज कार्यक्रम को आम ये विराम देउछु। वंदे उत्कल जननी।